really good, particularly for Captain Shiv Kumar and also Major Bhargav. I think I did had an opportunity to have a look at your profile, and I mean, some things which are extremely impressive, and I can definitely say that particularly in this platform and from your way of putting it forward, your ideas, your opinions, your outlook for the youth is something that will be a great thing to learn in this particular platform. Having said that, as Captain already mentioned, that my name is PRATIMA Jagadish. I am born and brought up here at Bangalore. I am corporate citizen for all these years and also an academic entrepreneur. I run an institute particularly focusing on working on employability skills with youngsters who are looking out to build their career and their career visioning, profile building, etc. And we train them particularly how to get ready for the employment. Plus, I also focus on working with educational institutions with respect to life skills. So I'm a professional counselor, and it's a long journey of academics as such, but these are the areas where I predominantly focus on, and we host a bunch of different courses, particularly for HR fraternity and who wants to become counselors. And we also run the career guidance sessions at the institute, and I work as a HR advisor for a couple of organizations. This is really in brief. Very glad to be a part of this platform and this great group discussion. And I thank you for this opportunity that I will be moderating this entire session, and I'm really looking forward for that. Thank you. Over to you, Captain. Oh, sorry. My bad. Okay, my bad. Okay. Okay, sure. Absolutely. Thank you. ओके, शुभ संध्या सभी दोस्तों, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सबसे इंटरैक्शन कर रहा हूं, और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वानप्रस्थ अंडर विजय एसके सिंह, बहुत ही नोबल कॉज है, और मैं सोचता हूं कि जो कार्य यहाँ पे ये कर रहे हैं और सबके इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स हैं जिनकी अपनी अपनी क्षमता है और कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, आप सबको ट्रेनिंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और आप सबको बच्चों को जो है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अभी अपने बारे में मैं जैसे कि एसके सिंह ने बता दिया है कि हम दोनों एक साथ एनडीए कोर्स में ज्वाइन किए थे 79 जुलाई में, और उसके बाद एक ही साथ में एक ही ब्रांच ऑफ आर्मी में सर्व किए, और उसके बाद तो ये छोड़कर फिर यूएस चले गए थे, तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करा, और अभी 2020 में फिर मैं रिटायर कर गया। जहाँ तक एकेडमिक का सवाल है, मैं जो है विभिन्न एनडीए ज्वाइन किया था 11वीं के बाद, लेकिन उसके बाद जो है मैंने बीएससी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी डिफेंस स्टडीज़, एमएससी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एमबीए फाइनेंस, ये सब डिग्रियां हासिल करी हैं। इसके अलावा इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स किया है, जिसके तहत जो है मेरा बच्चों के साथ जो है ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया, क्योंकि मैं जो आर्मी का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके अंदर मैं 2 साल के लिए पहले डिप्टी प्रेसिडेंट था, और फिर 3 साल के लिए एज ब्रिगेडियर जो था मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था। तो बच्चों का चयन फॉर एनडीए और ओटीए, आईएमए जो, और इंक्लूडिंग फॉर गर्ल्स, सभी के लिए मैंने ये सब उनका इंटरव्यू मैं करता था वहाँ पर। अभी जो है हाल में आफ्टर रिटायरमेंट मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ एसएसबी के लिए, और इसके अलावा मेरे जो है खेल के अंदर वो काफ़ी रुचि है,
और बचपन से ही जब स्कूल में थे तब से मैं शुरू किया था। जैसे एसके ने बताया, मैं स्विमिंग तो सबसे नंबर 1 पे है ही, उसके अलावा जो आज तक मैं मास्टर्स नेशनल में भी जाता हूँ और अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ उसमें। इसके अलावा मैंने सेलिंग करा हुआ है नेशनल लेवल पर, और मैराथन किया है, और रोइंग में नेशनल में किया हुआ है। तो ये सब मेरा रुचि है। अभी 2018 से मेरा जो है लिखाई में जो है रुचि हो गई, और काफ़ी मेरे आर्टिकल्स छपे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, 5G सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह में, सर्वेलेंस, ये सब चीज़ों में मैंने काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं। और ये आर्टिकल्स ज़्यादातर जो है क्लॉज सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ .in वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। और ये जो 1+ के साथ जुड़कर और आप लोग से बातचीत करके मैं अपना समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, और आगे जो डिस्कशन होगा उसमें इफेक्टिवली मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। धन्यवाद। Sure, absolutely, Capt. Thank you so much. I think students, I can see a lot of people over here, Surendra or Dharmendra. I think there are quite a few of you whom I'm able to see. Ravi, Rekha. I mean, I'm assuming that you are all students. See, we are going to definitely discuss on this particular topic, but it is very important that you present yourself on who are you, how do you want yourself to be recognized. Even if couple of people can answer this question, we can definitely throw some more light on what are our take when we say who is this youth, what is this group all about. Can anybody just take over, volunteer as number 1, and that makes all the difference. I would highly encourage you to talk. Anybody? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सभी बच्चों से, आप जब तक अपना बोलने का जो प्रैक्टिस है, ये माध्यम एक मिला हुआ है, इसमें बोलो। आप जितना बोलोगे, आप अपने विचार प्रकट करोगे, उतना ही आप लोग अच्छा बनोगे। अगर अपने विचार आप प्रकट नहीं करोगे,
तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल है, आपके अंदर क्या क्या भावना दिमाग में चल रही है। तो बोलना बहुत जरूरी है, और जब आप बोलते हो तो उसके माध्यम से ही हमें भी पता चलेगा कि आपको किस राह पर सही रास्ते पे लाना है, कहाँ पे आप जो सोच रहे हो वो शायद सही रास्ता नहीं है, और हम आपको करेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप लोग बोलो, तो हम तभी जो है ये वार्तालाप और आगे बढ़ेगा और अच्छी तरीके से डिस्कशन और जो है हम जो है फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ फिर वो केस में। मेरे विचार से मेरा नाम अखिल तिवारी है। मेरे विचार से युवा वो है जिसके पास ऊर्जा है और कुछ करने की इच्छा है। सो if I say in English, it's like somebody who has the energy and willingness to do something positive. That person is a youth. Interesting. Okay, thank you, Akhil. Thank you so very much. Anybody else? I think, this is how we are supposed to be putting it across our thoughts on. Can anyone start speaking about it? This is definitely a platform you should utilize. Sure. Fine, Captain. Yeah, I think Brigadier Akhilesh can actually take over, and please throw the light, and so that I will take over on that. Okay. So मेरी तरफ से who is youth, इसका जो आंसर है अगर चंद शब्दों में बताया जाए तो मेरी समझ में एक वो है वो ह्यूमन बीइंग जो उसने की एडल्टहुड अटेन कर लिया है। he or she has the voting rights, उसके पास वोटिंग देने का भी हक बन गया है। अब ये जो वोटिंग राइट है, यहां से जो है आगे की जिंदगी इस प्रकार से चलती है कि आपको ऐसी सुविधा मिली है कि जहां से आप नेशन बिल्डिंग में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे कदम रखना है। आपने अपने के अंदर क्षमता बढ़ानी है ताकि आप अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट हो सको और आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाओ, यानी कि आपका नाम जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। यू मस्ट आपको जो है समझ में आना चाहिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है, किस रास्ते पे आपको चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना। तो ये सब जब आपकी समझ में आता है तो आप बनते हो यूथ ऑफ द कंट्री। Absolutely. I totally agree, Brigadier. I mean, along with whatever he mentioned, let me put it across in this fashion as well. Is there anybody else who would want to put forward their thoughts, particularly on who is youth, apart from the Brigadier? I mean, he had a great points. So anybody else who would want to join in? Can I add a few points to what Akhilesh ji said? Yes, please. So youth is, as Akhilesh ji rightly said, someone who is adult and matured. What I had also written was that someone who has fire in the belly, मतलब उनको कुछ करने की इच्छा है, who wants a change, कि उनको अभी का जो माहौल है वो उसमें चेंज लाना है, उनके पास सजेशंस हैं, उनके पास स्किल्स हैं और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम वो क्या कर सकते हैं आगे। तो who has career in front of him and who has also the nation in front of him. अभी मोदी जी ने बताया कि next 25 years is going to be when we will be 50 years after independence.
तो आपका यही 25 साल होंगे वो बहुत महत्व के होंगे, शायद हम लोग रहें या न रहें, मगर आप लोग बहुत ही सीखेंगे और जानेंगे कि ये मेरा इंडिया और हमने ये किया वो किया। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, वो आप कह सकते हैं, और प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि क्या किया जाए। Absolutely. Thank you, Deepak. Anybody else who would want to answer this wonderful question? Who is youth? मैं युवा जो उत्साही हो, जिसमें कि विषम परिस्थितियों में भी जो घबराए नहीं। हमारे पास तरह तरह की विषम परिस्थिति आती है, उसमें जो घबराए नहीं, जो उत्साही हो और संघर्ष करके आगे बढ़ने की जिसमें क्षमता हो, वही युवा है। वो चाहे 80 वर्ष का हो या 90 वर्ष का हो। हम लोगों ने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा है, 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा भी। तो जिसमें जोश हो, उत्साह हो, वही युवा है। Amazing. Thank you, Mr. Pathak. Very nice, very inspiring as well. Okay, anyone else, so that I can just summarize and also put forward my thoughts into it, and then we can go to the next question. We have a lot of very interesting questions coming up. So anybody else who would want to put forward their thoughts? Okay, let me just put this forward. I think we started while Akhil Tiwari, who just answered, saying that who is this youth? Is somebody who has a desire, who has energy, and who has willingness to do something. It's absolutely a great definition to start with. So following which, we had Brigadier Akhilesh, who actually mentioned, saying that it's an adulthood. It's a wonderful angle and the dimension to say that, look, you have a great responsibility on your shoulders and the voting rights to build the entire nation. And voting rights is one of the most responsible aspects that comes as a part of your entire adulthood when you are entering in. And you will have to understand, how does the voting rights percolate in the nation building as well, and also the morality of what is right, what is wrong, what should I be doing, what would be the repercussions of the results, that whatever I am doing right now, what will happen for the next 5 years if I vote for this particular person. So this is something that he actually mentioned as a wonderful other dimension. Taken over by Deepak, he just mentioned that somebody who's got a fire in the belly, that's so right, and you have your own career from the personal perspective, and whatever you do as a part of your career, how does it contribute to the nation building is also a great angle to add with, because you as an individual who has a career plus the nation building is the contribution that you are going to do. So along with it, I think we had Mr. Pathak, who mentioned that you're not scared about it. You are super courageous during this time, and also greatly enthusiastic to take over. So complementing all these wonderful definitions, I would love to add that this is the transition that you have just entered in. You know, all along you were children, you were called as children until you are 15, 16, 17, 18. That's a peak adolescence. So youth is somebody who's young, and also somebody who has got a great energy, and you have taken the transition between the childhood to the adulthood. This is a great golden phase. Why do I call it as a golden phase? Is every angle, every aspect, every phase of your life is going to change. Be it your personal life, physiological, emotional, psychological development, morality, cognition, your thinking capability increases during this time, and you start questioning what is right, what is wrong, and spirituality also starts coming up to say that you will start pulling out all the questionnaire to say that why are the things the way they are, and also build yourself with skills, because you're questioning all these things. It's a great opportunity to build yourself. How do I build myself is, you will have to build for your career for the next upcoming life of yours, for the next 40 to 50 years of your life is right in front of you, and how are you going to build it? That's exactly is the golden phase. Plus,
you're supposed to be super independent. And this is what Brigadier also mentioned, saying that, okay, you should be somebody who's independent. Along with it, how do you even, how do you go ahead and to make yourself responsible? Trust me, this is going to be a great phase of your life, and you will have to embed what is responsibility. So responsibility right from the micro level to the macro level. At a very small level to a very large level, that being very responsible is something that you can influence others as well. And along with it, I would definitely encourage that you should develop confidence in yourself, that kind of a self-esteem to say, what can I do for myself and to the society around, so that it has its ripple effect for the entire nation. This is what I can just say, that you are the power of the nation for the next 50 years. That's how I can summarize. I think, Captain, we can also go forward for the next question. Okay, what makes nation great? Wonderful, wonderful, absolutely a great question. I would highly encourage students to answer this question. What makes nation great? We would want to hear from you. Trust me, you will give a different color to it. What makes a nation great? You are referring to? Students, Brigadier. Okay, yeah, absolutely. Yeah. The students, you have to speak, otherwise, the whole purpose of this, ये जो पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, जो वनप्रस्थ करा रहा है, तो सब मकसद जो है बिगड़ जाएगा. अगर हम ही लोग बोलते रहेंगे और आप नहीं बोलोगे, हमें चाहिए पता करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आप लोग बोलो, हम आपको गाइड करेंगे कि सही रास्ते पे लेकर रखा आएंगे. चलो बोलो सर वेरी गुड. बोलो. हेलो. यस सर, एक राष्ट्र को महान वहाँ का कल्चर बनाता है. Very good, Harsh. Okay. May I? Very good. Yes, Gaurav, please. किसी देश को महान बनाने के लिए उसमें मतलब योगदान सबसे ज्यादा उसके नागरिक का होता है. जिस देश के नागरिक अपने देश के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह देश उतना ही महान होता है. जैसे सभी मतलब देश के नागरिक ये सोचते हैं कि मुझे मेरे देश से ये अधिकार है, तो देश के प्रति कुछ अपना ड्यूटी भी होता है. तो वैसे ही जिस देश के लोग अपने ड्यूटी को निभाते हैं, अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो देश उतना ही महान होता है. Very nice, Gaurav. That's really nice. Thank you. Hello, good evening, all of you. मेरे अकॉर्डिंग जो राष्ट्र को महान बनाता है, नागरिक बनाता है, प्लस अब नागरिक की भी बहुत सारी कैटेगराइज हो चुकी है. तो यूथ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. यूथ का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है. जैसे कि ये मान सकते हैं कि यूथ के अंदर जो हर एक चीजों को सोचने की जो मतलब एक शक्ति मिलती है, वो कहीं ना कहीं उनके आसपास में जो चीजें देखते हैं तो उन्हें सीखने को भी मिलती है और समझने को भी मिलती है. तो वो क्या करते हैं कि किसी चीज को देख के और उनसे जो चीजें सीखते हैं, उसको कहीं फर्दर अगर वो कहीं पे जॉब में जाते हैं या कहीं अच्छे पोस्ट पे, तो जो सीखे रहते हैं उसको अप्लाइड करते जाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो राष्ट्र को आगे बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है. True. Very good, Ravi. Yes, that's really nice. Ma'am, I can. Yes, Raj.
एक राष्ट्र को महान वहाँ उस कंट्री में रहने वाले लोग बनाते हैं, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस कंट्री में जो लोग रहते हैं वो मेहनती हो और साथ ही एक दूसरे को हीन भावना से ना देखे और राष्ट्र के बारे में निर्भक्त मतलब एक समान होके सोचना चाहिए, तभी वो राष्ट्र महान। Very good, wonderful. What a great way of looking at it. Super. Okay, students, I think you are doing really great. Any other dimension to answer what makes nation great? Okay. Brigadier, I think you should take this question and answer it for us. ओके, ये जो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट, हमारे देश को बड़ा क्या बनाएगा। अब इसको बनाने के लिए सारे इसके सिटीजन्स हैं पहली बात, और सिटीजन्स में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है यूथ का। और हमारा देश भारत आज की तारीख में जो हम बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है कि आज की तारीख में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ है, सब मतलब कि नंबर ऑफ यूथ्स। और हमारे यहाँ जो है ये जो थी इसको बोलते हैं, मोदी जी जो बोलते रहते हैं जो डिविडेंड है यूथ का, उसके तहत हमारा देश बहुत ही कहना चाहिए लकी है। यूथ जब अगर बड़ा करना है तो इसके अंदर इट इज ऑल अबाउट वी एंड अस। हम उसमें उलझे रहते हैं ज्यादातर, आई मी एंड माइन, मैं हम करते रहते हैं। वो नहीं करना है, बल्कि क्या कहना है, हम लोग, हमारे लोग। इस प्रकार से जो देश के अंदर विभिन्न मशीनरी है, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक या गवर्नमेंट फंक्शनरीज, आर्म फोर्सेस, और सबसे बड़ी बात आती है इसके अंदर सिटीजन्स। और सिटीजन्स में सबसे महत्व योगदान है यूथ का। ये जब सारे के सारे लोग एक राह पे, एक रास्ते पर और एक दिशा में चलेंगे तो देश जो है आगे निश्चित ही बढ़ेगा और बहुत ही फायदेमंद में रहेगा। हमारे सब में जो है सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम लोग सब पूछते रहते हैं देश ने हमको क्या दिया, देश ने हमको क्या दिया। हमने ये बोलना है कि हमने देश को क्या दिया। तो हमारी सोच इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से करें। उसके अंदर आ जाती है आपकी ड्यूटीज एज अ सिटीजन एंड ड्यूटीज एज अ यूथ। तो उसके बारे में आगे चर्चा होगी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ और बाकी लोगों को बोलने का मौका देता हूँ। Sure, thank you, Brigadier. That was a great way of putting it across. Wonderful. Anybody else who would want to answer? And yes, Mr. Pathak. किसी भी देश के निर्माण में यूथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, पर यूथ शिक्षित और अनुशासित हो। ये दो बातें बहुत गौर करनी चाहिए, शिक्षित, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। ये जब आप में आएगा तभी आप दूसरे राष्ट्र को बता सकते हो कि हम प्रबुद्ध हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो एजुकेशन और डिसिप्लिन, ये दो बातें उसमें जुटनी चाहिए मेरे विचार से। Absolutely, I totally agree. Wonderful. Yeah. Okay, so that's really a very nice way of answering what makes a nation great. It's such a deep question, and while Harsh, Gaurav, Ravi, and Raj did an amalgamation of answering that a nation is being built great with their culture, responsible citizens, and the way that we learn, understand, and apply the knowledge that we have. And also, as Raj mentioned, it is more of the hard work with no discrimination that is being made, and all are seen equal. The equality really prevails.
So, along with that, we went ahead where Brigadier Akhilesh ji actually mentioned about the citizens, emphasizing and the importance of it's not about me, myself, I, me, myself. This is how we are today. But can we transform ourselves? It's not about I, it's about we. So how do we stand united? The kind of the political or a bureaucratic or the governance or with the defense or the professions that each one of us pick up. So any of these aspects, can we move in one single direction being united? I think that's something which is very challenging. And united, all of us can be individuals. So as we say that thousands and millions of droplets make an ocean. That's exactly how it is. The strength is in the unity. Ask not what the country has given to you, and ask yourself what have you given to the country. This is what Akhilesh ji actually mentioned, and followed with Mr. Pathak also added to say education and discipline. Discipline is so important. I think that is something which we are also lacking. We also see in the youth today. I think that is where your success actually comes in. To put forward my thoughts into it, most of you have done a brilliant job in answering everything that I actually carry as a part of what I think as well. Along with it, I feel that any nation, what makes nation great is all about all of us. What kind of attitude that we carry is so important. Each individual, all of these is a part of our attitude, part of our personality, part of the kind of how we think, what is the kind of a knowledge that we actually access. We can pick up any career, we can pick up any profession, but trust me, my dear friends, the profession, whichever, wherever you are, your attitude, your knowledge, you should see the bigger picture to say, how am I contributing to this nation in a very positive way? So, right from the beginning, we have been saying what is right versus what is wrong. And the influences that we will have is also something which is important for us to be aware about. And that, along with dedication, you should be really dedicated to what you really believe in and do. That's what the nation, that's what it makes a nation great, along with its citizen. Every citizen should think that, how can I make this nation? How can I give this to the nation? However small way, that's what makes a nation great. And that's my take on that. Thank you so very much for each one of you to put forward your thoughts, and that was a great question. Yes, Captain, can we go forward? What challenges are being faced in India today? Wow. Okay. Yes, my dear friends and my dear students, what challenges or do you face today? May I? Yes, please. Yes, Gaurav. Very much. आज के समय में इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है, लेकिन आज के समय में बेरोजगारी दर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमें इस चैलेंज पे यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। हमें बेरोजगारी को दर को बहुत घटाना होगा ताकि देश आगे बढ़ सके। Agree. Totally agree. Anybody else? What challenges are we facing today? Hello, ma'am. Is that Avinash? Yes, ma'am. Yes, Avinash. Please tell me. अभी के डेट में इंडिया में मेरे समझ से योग्यता अनुरूप दस्ता, यानी कि जो डिग्री है उसके अनुरूप लोग योग्य नहीं बन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। Interesting. Very good. That's a very deep thought, Avinash. Okay. Anything else that you would want to add that? Why is it so? क्यों हो रहा है? ये मैम सिस्टम जो है ना, वो एक तरह से मतलब इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। जैसे एक विद्यालय में ही देख लीजिए या एक ITI में, तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है। वहाँ पे लोग योग्यता मतलब जो प्रैक्टिस होता है प्रैक्टिकल, वो नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोग डिग्री लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। Agree. I totally agree, Avinash. That's a nice way. Okay, lack of practical knowledge and its implementation. Awesome. Anybody else who would want to add up on what are the challenges that we face today? You are facing I today. want to add in Avinash sir, whatever it is.
दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अविनाश सर जो बोल रहे हैं डिग्री सिर्फ बांटा जा रहा है लेकिन सब बेरोजगार हैं, तो मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट का पूरा दोष है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है हमको, उस हिसाब से वो हमको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही है। हमको जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो लेवल चाहिए वो बहुत हाई है, बट जो एजुकेशन जो हमको मिला है उसके लिए वो हम बहुत लो रहते हैं उस लेवल में। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव टू गिव अस हाई लेवल एजुकेशंस एंड I'll take that and I'll answer that question for you, Raj. Is your name Raj, by the way? Okay. yes. Okay, great. I'll definitely answer that question for you. Yes, anybody else who would want to answer this question? Yes, Ravi. एक्चुअली भारत में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा पे, तो शिक्षा की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि हमारे यहाँ यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात है, अगर हायर एजुकेशन के लिए देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बहुत कम हो गए हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कुछ लोग अच्छा जो जॉब मतलब अच्छे जगह जो पढ़ाई कर ले पा रहे हैं, उन्हें तो जॉब मिल जा रही है, वो अच्छे जॉब कर ले रहे हैं, बट जो एवरेज में आ रहे हैं उन्हें ना सही से कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना उन्हें सही एजुकेशन भी मिल पा रही है, तो इस चीज में वो पीछे हो जा रहे हैं। प्लस कुछ और चीजें हैं जो कि और भी भारत के लिए चुनौतियां हैं, जैसे कि बेरोजगारी पे चर्चा हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत में। उसके साथ अभी आज के डेट में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो एक कोविड के बाद बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, वो अपने चरम सीमा पे है, पता नहीं वो कब कम होगी, कैसे कम होगी, एक वो चीज आ गई है। प्लस एक और बहुत ज्यादा सोचने की चीजें आए हैं, वो है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, या जो भी हमारा जलवायु परिवर्तन वगैरह जो बोल सकते हैं उसे, ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के डेट में मैं क्या फील कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, मतलब बारिश की मौसम होनी, हम जहाँ पे हैं बारिश हुई ही नहीं इस बार। गर्मी आज के डेट में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग आज भी एसी और कूलर और सारी चीजों के पास बैठने को चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़े लोगों को आगे आना होगा जलवायु परिवर्तन के लिए। और एक चीज और है कि हमारा जो भारत है वो बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश है, तो अगर लोगों को एग्रीकल्चर के लिए भी अगर सही सिस्टमैटिक चीजें प्रोवाइड किया जाए तो ये भी भारत को बहुत आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। Sure, wonderful, Ravi. That's really nice. Kudos to you. Very proud of you. Very nice. Okay, I think Akhilesh ji, I would love to listen to your thoughts, please. मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने स्टूडेंट्स ने अपने अपने पॉइंट रखे, अविनाश, राज, रवि सभी ने रखे बहुत अच्छे पॉइंट। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा क्यों ये जो भी आप क्वेश्चन रख रहे हो कि ये कमियां हैं और हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसके कारण क्या है? अगर आप कारण में जाओगे और उसके बाद उन कारणों का आप खुद किस प्रकार से उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो और ऐसी वारदात ना हो, तो आपके हाथ में क्या है? अब आप बोलोगे मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है। अभी हमने बताया था कि आपका सिटीजनशिप है और आप एक यूथ बन गए हो, आपके हाथ में बहुत बड़ी चीज है। नाउ अभी आपको समझना चाहिए कि इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या हैं, और इसमें दो बातें आती हैं। कुछ चीजें जो हैं सिर्फ भारत से ही रिलेटेड है और कुछ चीजें भारत में भी हो रही हैं क्योंकि पूरी दुनिया में हो रही हैं। जैसे कि अभी आपने बोला महंगाई बढ़ गई है, महंगाई अमेरिका में भी बढ़ गई है, यूरोप में बढ़ गई है, रशिया में बढ़ गई है, चाइना में बढ़ गई है, हर जगह बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जो शुरू हुई यूक्रेन रशिया वॉर के तहत, और उसके बावजूद हमें आपको पता है कि हमारे देश बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी एक पहली बात ये।
दूसरा है, बहुत अच्छा पॉइंट था कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब इसमें मैं कुछ हमारे विचार कुछ अलग हैं। मैं कहता हूं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। यानी कि यूथ के पास, जो अभी एक बच्चे ने बताया कि डिग्री तो है, लेकिन किस प्रकार से कोई काम किया जाता है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, उसकी बहुत कमी है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाया जा रहा है, और ये अभी थोड़े कुछ सालों में ये बदली हो जाएगा। लेकिन इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप में से 50% से ज़्यादा आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है। आज की तारीख में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि क्या चीज किस तरह, कब और कैसे की जाए, लेकिन ज्यादातर लोग, बच्चे लोग उसको एंटरटेनमेंट में ही यूज करते हैं, गूगल सर्च को। लेकिन गूगल सर्च में आपको जिस चीज के लिए, किसी विषय के लिए कुछ पता करना है, सब चीज उसमें अवेलेबल है। तो अपने एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए, अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको भरपूर फायदा उठाएं। अभी हमारे बोलते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे देश के अंदर जो स्कूल एंड कॉलेजेस बहुत कम हैं। अभी 2014 में आप देखिए कि हमारे पूरे देश में एक एम्स था। आज की तारीख में 16 से ज़्यादा एम्स हो गए। तकरीबन हर एक स्टेट में एम्स हो गया है, हर एक स्टेट में IIT हो गया है। तो ये कॉलेजेस बढ़ गए हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? अगेन स्किल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ जो हमें एजुकेशन देते हैं, यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी नॉलेज में भी बढ़ावा होना चाहिए, और उनका जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो उतने हैं नहीं। तो अब उसका समाधान क्या है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को सिखाना। तो बच्चों को ये समझना होगा, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि हर एक चीज आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है और उससे आप भरपूर फायदा उठाएं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ठेस पहुंचाती हैं, कुछ चीजें वो भी मैं बताना चाहूंगा। क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा चीज था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारे देश का बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट था। आज की तारीख में वो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा हिला हुआ है, डाइल्यूट हो गया है। तो इसको कैसे वापस मजबूत किया जाए? हमें समझना होगा कि ग्लोबली, पूरे दुनिया में किस प्रकार से सीन बदली हो रहा है। आपस में हर एक देश अपने बारे में ज्यादा सोचता है, पूरे दुनिया के बारे में कम सोचता है। उसी कारणवश ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, कई जगह बंद हो गई हैं, और वगैरह वगैरह। तो ये भी सोचना होगा। जो मैंने पहले बताया था कि हम सबको वी एंड अस के बारे में ज्यादा बोलना है, ना कि मैं और आई के बारे में। धन्यवाद। विजन, इनोवेशन और आतंकवाद हमारे देश के लिए चुनौती है। हाँ, ये सब बातें हैं, लेकिन अभी इसको स्टूडेंट के वहां पे हम ले नहीं जाएंगे उस इलाके में। बाकी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे। Sir, I wanted to speak something. Sir, actually, I wanted to put some light on my views. Sir, actually, there are many problems which our country is facing. Suppose, sir, like poverty, unemployment, and sir, but we never talk. Sir, we always talk on the problems that our country is facing. We never talk on the situation that how to resolve them. Absolutely, बहुत सही बोला आपने। Sir, actually the thing is that sir, we always know that discrimination of crime against women, we see that. So discrimination on the basis of caste, religion, or something like that, we always see that.
But sir, we never talk on that how to resolve that. Sir, in last few days in Kolkata, sir, I think a week before, sir, there were many women who tried to do something, but what they had received, that they had received hard sticks from police officials. And sir, I think this session is going to end very soon, so be prepared to go on to the next slide. Okay, sir. Okay, sir. You are mute. Pratima ji, are you on mute? Okay, I'm so sorry. Okay, thank you so very much for each one of you who actually answered quite a lot. And at last, Aman was like so energetic to put across, okay, these are all the challenges, and he brought in a different dimension altogether. Thank you so much, Gaurav, Avinash, Raj, Ravi, and also Akhilesh ji with Aman as well. So put it right from starting from unemployment, you brought in a great facets to say that this country is facing quite a lot of challenges, be it the degree or the kind of a practical knowledge that put across. And Raj mentioned about that we are prepared, we are preparing for the job and the qualification is there, and from the government perspective, nothing is being done. So I did tell you that I will answer that question for you. But my dear friend, this is something that the National Education Policy 2020 is highlighting. We have recognized this. So after a span of literally 36 years in this country, we are bringing in a great revolution in education, and the skill development is going to be the focus. And we already have the NSDC, that is National Skill Development Corporation. So I did tell you about it. Next week, we are going to present NEP as well. If people do not know, I would highly encourage you to please attend next week's webinar as well, and we will present you what is this job and the qualification preparation with the current education, and what are the major changes that is going to bring in. And that was my answer for you. While Ravi also mentioned, we have great lot of universities, and the number of universities is less and the standard of living is more, and we have a lot of environmental changes, for which I think Akhilesh ji actually answered that question absolutely in a very wonderful way, that there are challenges just not as a nation but also as a global challenges that every country is facing, be it the inflation, be it the standard of living, be it the environmental issues, all across the globe. These are all the challenges. So he did mention about a brilliant point. I just loved that, saying that there is a difference between an employment and employability. Please catch this, my dear friends. I think that is a golden point that he mentioned, saying that we have jobs. Trust me, I come from the HR background. I know what the industry is. I have faced people coming with the interviews and how do they get in or they get rejected, but we do have jobs. We have lots of jobs available here in India, but the fact is, how employable are we? How skilled are we to get those jobs? That's something that we will have to think about it, and you will have to develop, because the academics cannot give you every year, and it cannot be changed every year with the kind of a pace that we are changing. Technology is the speed of the technological change is absolutely in a great speed. So please ensure you focus on your skill development. There are lots of available resources for it, which we will present it to you as well. Use Google search, as Akhilesh ji rightly mentioned. Use Google for the smart way. So be smart enough to use your smartphone. It's just not about entertainment. Entertainment is just for a break, not for the entire the time that is available. So use those resources for a better thing. So to summarize, I would like to put it across that
all put together, let's put across that the challenges that we face today. One is, we generally say that this is under my control, this is not under my control. We call this as a circle of control. But according to me, the challenges that we are facing, it's not about circle of control or not the circle of control, but it is under my control, where I can contribute even at the very, very smallest fraction of it. Let it be even the smallest of the fraction, but I can contribute. Be it the kind of people challenges or a geographic or environmental challenges, etc. What can I do about it? Trust me, when you can be the solution, you are inspiring 10 others around you to do this. Very simply put across, let's not litter around the society. Let's not throw the things in the society. Waste management is the biggest problem here today. So if we can actually take it forward for every single smallest of the responsibility, every individual, that contributes quite a lot for it. It inspires others to follow us as well. So to say that all of us can contribute, however small. Yes, I am done, Captain. I'm done. Sure. Absolutely. Sure. Thank you. Thank you, Captain. Thank you. तो हैं, होंगे, और मेरे हिसाब से जब तक ज़िंदगी किसी की रहेगी वो साथ ही रहे। कोशिश हमारी ये करनी है कि जो हमारी ज़िंदगी है उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, वो देश के कैसे काम आए, हमारे राज्य के कैसे काम आए, हमारे समाज के कैसे काम आए। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश बहुत उन्नत है। इन्फ्लेशन या महंगाई जो भी हो, लेकिन आज के तारीख में लोग भूखे नहीं हैं। अनाज की कमी इस देश में नहीं है, हम अनाज उन्नत हैं और हमारे पास अनाज इतना है कि हम दुनिया को दे सकते हैं। और काम की बात है तो एक हमारे मित्र ने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में जो उन्होंने बात कही बहुत ही सटीक बात है। तो हमारे देश में एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है, कल ही मेरी एक बात हो रही थी, और बात हो रही थी, शायद आप लोग इसको गौर दें, कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम अधिकारी के रूप में काम करते हैं। मैंने कहा यदि अधिकारी को 1 लाख और चपरासी को 5 लाख रुपए दिया जाए तो शायद बहुत सारे अधिकारी चपरासी का काम करना पसंद करते हैं। अंशतः शायद सत्य हो, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। तो ये हमारे देश में एक जो अंग्रेज़ों ने ये एक हमें लिगेसी दिया है कि ये बड़ा काम है, ये साहब का काम है, ये छोटा काम है। मैं डेनमार्क में गया, एक बच्चे को मैंने कहा कि मेरा एक फ़ोटो खींच लो, क्योंकि मैं सेल्फी नहीं लेता। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम डेनमार्क में क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। मैंने कहा क्या पढ़ते हो? तो बोला मैं कारपेंट्री पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कारपेंट्री पढ़ के आप क्या करोगे? बोला मैं जाके कारपेंट्री की अपनी दुकान खोलूँगा और वहाँ पे फर्नीचर बनाऊँगा। तो मुझे लगा कि आप सोच समझिए। मैं इज़राइल गया, वहाँ पे मेरे जो ड्राइवर साहब थे उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? उसने कहा कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, 5 साल आईटी कंपनी में काम किया है और मैंने कंपनी छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी और आप टैक्सी चलाने लगे? बोला हाँ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे 9 बजे से लेके 7 बजे बैठ के काम करना अच्छा नहीं लगता। मैंने 5 साल काम किया, मेहनत की, पैसे बचाए, नई मर्सिडीज़ खरीदा और उस मर्सिडीज़ को मैं अब जब मर्जी होती है चलाता हूँ और उतना ही पैसा कमाता हूँ जितना कि मैं आईटी कंपनी के हिसाब से कमा रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई बोलेगा वो ड्राइवर है, कोई बोलेगा वो चपरासी है, कोई बोलेगा वो कारपेंटर है। और हमारे पास जो हम एम्प्लॉयबिलिटी ढूंढ रहे हैं, इन्होंने एक कहा एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। दूसरी बात ये भी है कि यदि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर का काम नहीं मिल रहा है
तो क्या मैं डिप्लोमा वाले का काम लेके आगे बढ़ सकता हूँ? क्या एक बिना इंजीनियर वाला जो काम मिल रहा है उसको लेके फिर मैं डिप्लोमा के लेवल पे आके फिर इंजीनियर के लेवल पे आके आगे बढ़ सकता हूँ? तो ये जो हमारे दिमाग में है कि ये काम अच्छा है, ये खराब है, ये सोशली एक्सेप्टेबल है, सोशली रेस्पेक्टेबल है, ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है वो ब्रिटिश लेगेसी ने दी है। और वो साहब हैं, वो अर्दली हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमारे सारे संस्थाओं में पानी पिलाने के लिए एक अर्दली है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इतनी संपत्ति है कि मैं पानी पीने के लिए कर्दली रखूं। पानी आदमी खुद भी पी सकता है, लेकिन आप किसी भी संस्था में जाइए, पानी कोई और ही ला के पिलाता। तो मैं थैंक यू। मेरा कहना है कि चैलेंजेस हैं और इस देश में एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। आप चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आपको घर के पास भी मिल जाएगा। और 1 लाख स्वयं सेवक समूह जो लेडीज़ का आज मोदी साहब ने एड्रेस किया, वो एक आपस में अपने में द्योतक है। तो विद दिस आई कंक्लूड, आई से दैट इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, आवर यूथ इज डूइंग वेल, एंड यू हैव ऑल द पोटेंशियल्स टू टेक इट टू द टॉप एंड मेक इंडिया शाइन। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Captain. Thank you. Great. So let's go ahead to have the very next question. We have a bunch of interesting ones. Okay. What are the major issues that youths are facing today? What helps youth to expect from what can they expect from the various other resources? Yes, any of the students and the prospective youth of this country, I would highly encourage you to talk. Absolutely. Your expectation. Yes, sir. Sir, I was, ma'am, excuse me, I was saying that, ma'am, how can we focus on the solutions, ma'am? Like, ma'am, if we are seeing that there are some crimes which are happening against women, ma'am, we are just seeing that they are happening. We are reading it that on newspapers. We are seeing that on televisions, ma'am. But how to resolve that? What are the steps that can be taken to resolve that? Correct. So that's exactly is the question, Aman. So have we ever thought, what do you expect? So of course, all of us want the solution around it, but have you ever thought, okay, this might be the solution. Let's figure it out, whether is it realistic or ideal. I mean, whether it's idealistic or how practical it is secondary. But what do you expect from various different, is it people, is it governance? What do you expect to solve this problem? According to you folks, according to you, right now you are the youth population of this country. What do you expect the changes? Okay, that should happen, this should happen. I'm sure you would have thought about it. You would be expecting so much. Tell us, what are you expecting? Ma'am, yes, please go forward. Yes, Raj. So after Raj, Aman, take over. ओके मैम आई विल थिंकिंग दैट कि अगर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए हमारे देश में कि सबसे पहले हम लोगों के लिए एक गाइडेंस अच्छा सरकार को बनाना चाहिए, एक नया डिपार्टमेंट खोलना चाहिए जो हम लोगों को राइट वे में गाइड कर सके। एंड सेकंड थिंग ये होना चाहिए कि यहाँ पे किसी को भी रिजर्वेशन सिस्टम हटा देना चाहिए हमारे कंट्री से। आई थिंक एवरीवन शुड बी इक्वल, सो everyone have to give equal contribution in our country, because there are so many reservations in our country that back caste people will be get forward and we are can't.
सो एंड थर्ड थिंग मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और उसमें टीचर्स जो क्वालिफाई होके आए हैं, आई थिंक पुराने जितने टीचर्स हैं उनको सस्पेंड करके न्यू टीचर्स को अप्रोच करना चाहिए। इससे हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और बेरोजगारी भी खत्म होगी। तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से। Absolutely. Wonderful points, Raj. Okay, Aman, you were saying something. Yes, ma'am. Ma'am, I was just saying that, ma'am, that I think Raj is correct, ma'am. He said that reservation system should be abolished. Ma'am, I think it really should be abolished, ma'am, because, ma'am, as per my personal point of view, I'm not saying about others, ma'am. What I think is that, ma'am, when we take admissions in admissions in colleges or somewhere in schools, ma'am, we always sees that we are always deprived because of because the lower castes are given much more opportunity. Ma'am, they have already given the opportunity that they have. If we are thinking that they are equal, so they must be treated as equal. What I think is, ma'am, because we think that they are equal, ma'am, like so that's why they have given the equal opportunities. They are studying with us in schools and colleges, ma'am. In point, ma'am, what I think is in about education. So, ma'am, they should be treated as equal, and we also should be treated as equal as them. Absolutely. Okay, so taken. Absolutely taken. Anybody else who would want to answer this question? What do you expect from the various other sources? Anyone else who can throw some light on your expectations? Okay. So let me put it across in this way. For both Brigadier Akhilesh ji and Group Captain Ashok, probably this is where you can tweak a little bit of answers on what are the various sources that we can go ahead to solve the major issues, because we have had an opportunity to speak so much about the problems, and I think we have even spoken about it. And Raj and Aman did mention about, both of them mentioned about the reservation and its abolition. It's a very, very sensitive issue. I'm sure that all of you understand how it is, but the youth is actually thinking in a very prospective way today, because it's both from an angle of who is being deprived and who is taking an advantage of it. Initially, while post the independence period, yes, they had to be given an opportunity more than somebody else to uplift them. But after 75 years of the independence today, I think there are a lot of them. See, any changes happen only when the majority feels that this is a need for the hour. So while there was a need for a reservation to uplift one particular cult, today when the majority of them see from the myopic lens, from wearing a very broader perspective, saying that all of us are equal, we are speaking of equal rights. So when majority of us voice over to say that it's a great thing and it is not about reservation, it's about equality today. It is not about also for the fact that how can we even discriminate as a part of the religion or as a part of the community, etc. This change will happen. It will definitely take its own time, but I think according to my analysis, it will be something which will bring a major change. But unless and until majority of us feel this way, we might not get there. That is one particular part. And Raj did actually mention about the guidance and the infra as well. I think infrastructure, just not with respect to education, the teachers or the schools, but the overall infrastructure of the nation is also something that there is a focus on. And there are places where we can voice over. Probably I will give the platform to both Akhilesh ji and also Group Captain Ashok to say that what are the resources that are available in your view today that these folks can actually utilize.
Brigadier Akhilesh, if you can help us throw some light on this, that will be a great help. Okay, so as you have very rightly said, firstly we have to understand, सभी को समझना पड़ेगा सॉरी कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। आज की तारीख में जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो 50% से ऊपर उनकी आबादी हो चुकी है। अगर इस चीज को बदली करना है तो सभी को समझना होगा कि ये जो चीज है एक तरह से हमारे देश को जंग लगा रहा है और इसके कारण जो हमें आगे बढ़ना है जिस रफ्तार से वो हम बढ़ नहीं पा रहे। अब ये हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी मैच्योर नहीं हो पाई। हमारे 75 वर्ष हो गए हैं अब आज़ादी के, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुई है। वही बात आती है कि सभी सोचते हैं कि मेरा टाइम निकल जाए और मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, मेरे बच्चे को रिजर्वेशन मिल जाए। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और अगर वो रिजर्वेशन के थ्रू आया है वो भी चाहेगा कि मेरे बच्चे को रिजर्वेशन मिले। तो जब तक ये सोच बदलेगी नहीं तब तक ये हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वोट का ही आंकड़े हैं इसके अंदर। पहली बात। दूसरी बात, अब हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात ये इसमें जो है, तो आप लेट मी ऐड शिव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और हम इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि कुछ हमारे नौजवान हैं जो इस पे दे आर अजाइल टू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तब ये बात हमारे जहन में थी भी नहीं, ना हम इसको समझते थे, ना इसका क्या देश पे और यूथ पे होगा परिणाम, वो भी हम समझते नहीं। लेकिन अभी मैंने कुछ 2 दिन पहले एक लिखा है, इस देश में 3 प्रॉब्लम है, PRR। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है रिजर्वेशन। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है उसको, जैसे हमारे यंग दोस्त ने कहा कि ये प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखें, आप एक जागरूकता फैलाएं, आपस में ही बात करें। तो ये भी it can be a seed and that seed can germinate into a tree। अब जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि उनकी बहुसंख्यक हो गए हैं, तो जब बहुसंख्यक हो गए हैं तो पार्लियामेंट में तो उनको हराने से हम, और ये कैसे सुधार आएगा, ये एक अपने में ये है। लेकिन हाँ, आप सोचें और हल इसका निकलना है, आज नहीं तो कल। और कैसे निकलेगा ये भी हमारे जो आज के नौजवान हैं यही जब सोचेंगे, जागरूक होंगे तो करेंगे इस चीज़ को। और दूसरी बात जहाँ तक है लेडीज़ और वुमेन के प्रति जो हमारे यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि आप अपने घर से शुरू करें, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें शुरू करें अपने, कि मैं कभी नहीं करूँगा, मैं ये गलत होने नहीं दूँगा। हर एक आदमी यदि यही प्रण करता है, उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये बिल्कुल कतई गलत है, तो मेरे ख्याल से ये हम एक छोटा सा स्टेप लेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम करें, और जिसको हम अपने प्रभाव शैली में और जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉजिटिवली, वो करें और इस देश को और अपने आप को खुशहाल बनाएं। इतना है बस। थैंक यू। Absolutely. Thank you, Brigadier, and thank you, Group Captain. I think we will go to the next question. So we have a couple of more interesting ones. What are the qualities and the skills that youth should imbibe to contribute positively to the nation building? So we have spoken about major issues. We have spoken about a bunch of different, how do you contribute as well, but qualities is required. So what are the qualities according to you first, before we all take over? It's important that we hear you out. What are the qualities according to you that you should develop?
It's a self-awareness question, my dear friends, and the students and the prospective youth of this country and the present youth of this country. What are the qualities and the skills that you think you should imbibe to contribute to the nation building or to just develop yourself? More discipline, I think. More discipline. Very good. Less hypocrisy. And I'm not saying literacy, but real education. Real education. Okay. Okay, Saurabh, are you a student? Are you still studying? No, ma'am. I do a job. Oh, okay, you're working. Great, great. Wonderful, wonderful. I really loved your point of less hypocrisy. That's such a wonderful quality to imbibe with. Okay, anybody else who can answer this question? Oh, okay. Oh yes, oh yes, oh yes. So what are where do we excel, or where do we, SWOT is all about the strength, weaknesses, opportunities and threats. So here are the qualities where the areas of improvement. What you can think from the SWOT is about what are those areas of improvement that we can focus on, wherein we can develop, which will contribute positively to the nation building. That's how you should be looking at it. So Saurabh did mention about having that discipline and also less of a hypocrisy. That's a great quality. Can you throw some more light all others? I would highly encourage you to speak up. According to you, what qualities should you develop? Ma'am, can I say? Yes, please. Yes, Raj. I think, ma'am, एक यूथ में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अगर वो कुछ ठान लेता है तो उसके लिए वो करके उसको रहे। ऐसा नहीं कि आज हमने ये सोच लिया वो नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे एम चेंज, प्लान चेंज, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट खुद सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हमने जो कहा वो हम करेंगे। देन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, आवर ऑल एल्डर्स, एंड who are smaller than us, we also have to respect them. And the second thing, we have to always think positive and see the opportunities that is coming towards us and try to capture them. Wonderful, wonderful. Great. Thank you, Raj. That was great. Yes, anybody else who would want to add? मैम मैं कुछ बोलूँ इसमें? मेरा दो पॉइंट्स एक्चुअली। यस प्लीज। एक तो कि हमारी अपनी सोच बदलनी होगी सबसे पहले, और उसके थ्रू हमको अपना चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपना खुद का चरित्र निर्माण नहीं करें। एक तो वो बातें हो गई, और दूसरी कि जो कुछ भी छद्म रूप में है, जिसको कोई शुडो जो बोलते हैं, whether it's pseudo secularism or pseudo nationalism or pseudo knowledge, हम अपना जो ज्ञान बगाड़ते हैं, तो हमारी सोच बदल के जब तक हम ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे कि हम कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम भ्रमित हो रहे हैं, जब तक हम वो क्लैरिफिकेशन अपने आप में नहीं लेके आएंगे और हमारी सोच ठीक नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमको खुद से अपने से शुरू करना है कि हम क्या करें। जो ट्रूथ है, ट्रूथ इज ऑलवेज लाइक डीप इनसाइड, तो हम अंदर तक जाके वो सच को खोजें, सच की तलाश में रहें, आगे बढ़ें, और हम अपना उसके थ्रू हम अपने आप को एक इतना समझदार बनाएं कि हम क्या सही है क्या गलत है वो हम डिसीजन कर पाएं और उसके थ्रू हम आगे बढ़ें। Wonderful, wonderful, Akhil. It's absolutely a brilliant point, and you put it across in such a brilliant way. I really loved the way that you put it across. Thank you so much. Can I add one or two points? Yes, Mr. Deepak, please do. So, it has been an excellent discussion, and a lot of good points have come from our youth, and also Ashok ji, Akhilesh ji, and everybody else. What I am saying is, yes, there are macro issues and always there are micro issues. मतलब जो macro issues होते हैं हमेशा
कि रिजर्वेशन ये वो वगैरह, एम्प्लॉयबिलिटी, कॉलेज नहीं है, वो सब सही हैं। और इसके लिए हम लोग, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वैसे हम लोगों को गवर्नमेंट को मतलब पॉइंट्स देने चाहिए, और हम देंगे कि ये करना चाहिए, कि दीज थिंग्स टेक टाइम। वो इतना इजी नहीं है, इट टेक्स टाइम, बट एट द सेम टाइम यूथ को हम लोग, वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड कि ये हो रहा है, करप्शन हो रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है, तो मैं क्या करूं। वी शुड नॉट गिव अप, मतलब वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन, and improve our own selves, first as a micro level what we can do. अभी आप लोगों ने बताया कि what I can do and not what the nation will do for us. That is absolutely important. Skill development की बात हुई, that is very very correct, that will help. But और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब डिस्कशन में हम लोग एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी की ही बात करते हैं। अभी अशोक भाई ने बहुत अच्छा बताया कि इफ एवरीबडी इज एन एम्प्लॉय, तो हु विल बी एन एम्प्लॉयमेंट गिवर, इन द सेंस कि इफ इवन एनीबडी थिंक्स ऑफ डूइंग हिज ओन वेंचर प्रोफेशन, तो वो खुद 2, 3, 5 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। कि हमेशा ऐसा नहीं कि मुझे अभी सब पहले मुझे बताया गया कि सब बच्चों को खाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो खुद भी छोटा धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो वो खुद 5 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। कि ये गवर्नमेंट तो मतलब इजी जॉब हो गया, तो मैं लेजी 9 से 5 जाऊंगा और मेरा तो लाइफ सेट हो गया। तो ये भी सोच बदलनी होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब तो खुद की एम्प्लॉयबिलिटी होगी, और मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो अच्छा रहेगा। तो these are the points I had in mind, which we will have to share. And as regards these women and girls crimes against them, I really feel that we have to tell government, and everything, or democracy is a weakness, we should not go political. But in certain other countries मैंने देखा है कि 3 के 4 वो सुनवाई के बाद वो केस खत्म होना ही चाहिए। अब लॉयर लोग ये 10-15 साल चलाते हैं और कुछ नहीं होता है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इट हैज टू बी डन ब्रूटली एंड फास्ट ट्रैक, 2-3 महीने में केस क्लोज करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Deepak. Thank you so much. I think most of them actually did mention about quite a lot of very nice points. I would want to say both Brigadier Akhilesh and also Group Captain Ashok, just give us 3 bulleted points as to what are these qualities that youth should imbibe, so that we can summarize and move on to the next question, please. तो मेरी तरफ से ऐसे पॉइंट हैं कि सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा टू सी हाफ ग्लास फुल रादर देन हाफ ग्लास एम्प्टी। हर एक चीज में पहलू है जहाँ पे अच्छाई है और थोड़ी सी कमियां हैं, तो पहले अच्छाई को देखना शुरू करें, और वहीं से उत्पन्न होता है ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पॉइंट जो कि दीपक जी ने बोला। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन। हमारे खुद के अपने अंदर झांक के देखें कि हम कितनी सही रास्ते पे चल रहे हैं और कहाँ पे हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि उसमें आता है आत्मविश्वास, कर्तव्य परिश्रम, कठोर परिश्रम, पक्का इरादा और कर्तव्य निष्ठा। तो ये जो पॉइंट्स हैं कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क करने की क्षमता हमेशा सबसे अहम और सबसे पहले होना चाहिए। दूसरों को हम उंगली उठाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या अपना ऑप्टिमम मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फोकस्ड एम रखें ताकि एक दिशा में बढ़ें, ना कि कभी हर एक दिन हर वक्त अपना एम बदली करते रहें और अलग अलग दिशा में जाते रहें। तो आपने जैसे बोला 3 बुलेटेड पॉइंट, तो मैंने 4 बोल दिए, आगे अशोक जी बोले। Sure, thank you sir, thank you so much.
Yes, sir. On Okay. to ओके, yeah. थैंक यू। मैं बोलूँगा एक आर्मी का रेजिमेंट है, उसमें उनका वो वॉर क्राई है, निश्चय कर जीत करो। निश्चय कर जीत करो मीन्स आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए। वंस यू हैव सेट द गोल, देन गो आउट, ऑल आउट फॉर इट एंड विन इट। तो पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको क्या चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट। Well, you want to be a prime minister, you want to be a chief minister, you want to be an entrepreneur, you want to be an educationist, you want to be a sports person. I think there's a plethora of things. So that you understand. Once you have identified, then you must equip yourself as to be there. And to equip yourself, you must plan and take actions. I'm 100% sure कि आप जो भी चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं और कोई कमी नहीं है। एजुकेशन आज सबके मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक्चुअली अंबानी साहब ने कर दिया है आज के तारीख। एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी दिल्ली वालों ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन रखी हुई हैं, हर एक आईआईटीज़ ने, वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने, इंटरनेशनल। तो आपको स्किल और नॉलेज दोनों अवेलेबल है। आप ये 3 चीज़ डिसाइड कर लीजिए एंड देन गो ऑल आउट फॉर इट। निश्चय कर जीत करो। Super, super. Thank you, sir. Thank you so very much. Absolutely. Sure. नहीं शिव तुम बोल लो देयर आफ्टर I'll speak. Absolutely. Sure. Oh, yes. Thank you, Captain. Thank you so very much. So this was a very, very interesting question. And thank you so much for great answers and great insights from each one of you. While Saurav actually started speaking about having more discipline and also, the less hypocrisy, that's one of the very important quality, followed by Raj did mention that we need to have that kind of a self-respect. And one of the very nice angle that he also brought in was the instantaneous, rather than sacrifice those instantaneous gratification aspect, which I also wanted to add across, and be dedicated. That dedication came across in everybody's quality to be imbibed, and respect for others and think positive. This is so important. Or also use the opportunities that comes to you. Recognize those opportunities. That is something which is important. And in the similar way, I think Akhil and also Deepak took over to say that change
the thought process, if you can change the thought process, that's where you can actually go ahead to build it for the rest of the nation, right from the micro level to the macro level. And one of the very nice points that he mentioned was the right, wrong, and the illusion. So that's something which I really loved it. The various different angles to it and the pseudo knowledge. We can think that we might be great, but are we really great? What are we going to what are we doing to be great is also something which is important for us to have the self-questioning aspect. That is something which is important. And Akhilesh ji actually did mention about what is the realistic, whether is it half filled or half empty. So we call this as something which is optimistic and pessimistic, but more than that, I think realistic is more important. That is seeing half full and half empty. How do we imbibe the kind of self-discipline and self-confidence with a focused aim and putting across the hard work? And Group Captain Ashok did mention, take the firm decision with whatever you want to be good at, identify what you really want to be, equip yourself, take actions, really, really important. Any of your ideas is useless unless and until you put it into action. Please remember this. While Captain Ashok did mention, you have already been through the SWOT, utilize this and ensure that you create that critical review for yourself every week or every month, but be aware about it. So along with this summary, I just wanted to put across a couple of my thoughts. Most of you have covered all of them. First thing, one of the very, very important quality that I would endorse is build resilience. Resilience is something which is important. What do you mean by resilience is, do you have the courage to get up once when you fail? Trust me, my dear friends, all of us will fail. In one or the other aspect, failure is something which it will happen, but don't give up. Don't ever give up. So build that resilience to say that it is okay to fail, but I will get up and I will stick to what I really want to be. That is a very important human quality that we all need to imbibe for ourselves. And build yourself positively. And it is just not for today or tomorrow, for a couple of more years. It's a lifelong process. Build yourself for all the years to come and don't ever give up. And at last, particularly for the youth, what I have witnessed is the kind of an instantaneous gratification. Immediately, I want everything. The results is supposed to come today. Tomorrow, I have done this today. Tomorrow, I need to see the results. But no positive development will happen overnight. It will take time and you will have to put hard efforts for that. So don't go behind instantaneous gratification. It will not happen and you don't lose out on that particular race. Life is not, life is a journey. It's not a travel. A travel is not a competition. So it is more on, are you happy about it? Are you satisfied about it? So instantaneously, nothing will happen. No positive development will happen overnight. So be patient-minded. Stick to the things as what all of you did mention in the summary wise. Equip yourself and build yourself for the lifelong process. I think these are some of the things that was highlighted in everybody's contribution towards it. Thank you so very much. I think very, very fruitful and a very quality discussion is something that we had. And I really thank each one of you, Gaurav, Avinash, Raj, Ravi, and a couple of people who actually did contribute, Deepak, Mr. Pathak, and all of them, students, and a special note of thanks to Brigadier Akhilesh and Group Captain Ashok to bring your rich experience to the platform, share it with the students. And thank you so much, Captain Shivkumar, for giving us an opportunity, and we will expect the second part to come soon. On to you. Yeah, Shiv. Good evening to everybody. And Akhilesh, I'm very happy to hear you after a very, very long time, I think, after the NDA. Ashok, Deepak ji, thank you very much, everybody. मेरा एक दो पॉइंट था जो मैं आई वांटेड टू ब्रिंग इट अक्रॉस स्पेशली फॉर आवर युवा लोग जो हैं कि दो एक चीजें जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा हूं लोगों के साथ बिकॉज आई एम एम्प्लॉइंग अबाउट 900 odd people एंड आई फाइंड उनमें एक चीज जो लैकिंग है एवरीवेयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर
वो उसको समझना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम क्यों करूंगा, मैं वो काम क्यों करूंगा, पढ़ा किस लिए था, ये काम करने के लिए। ये सोच मन से निकालनी होगी इफ यू रियली वांट टू गो अहेड इन लाइफ। वो पहली बात है। दूसरी बात है इंटीग्रिटी। Integrity is not for a showcase. It's not a showcase integrity. It's integrity of action. ये आपको अपने घर में भी देखना होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस समय मेरा दिल धड़क रहा है क्या, कोई दाहिने बाएं मैं देख रहा हूँ कि कोई देख तो नहीं रहा है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जस्ट इट्स अ वार्निंग सिग्नल फॉर यू। ऐसा काम मत कीजिए। हैव दैट डेवलप दैट एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए सही फैसले करने की सोचिए और दिल की सुनिए। अगर दिल धड़कता है, कुछ करने में डर लगता है, प्लीज वार्न योरसेल्फ, टेक द राइट एक्शन एंड वर्क फॉर योर ओन प्राइड। व्हेन आई से वर्क फॉर योर ओन प्राइड, द मोमेंट यू डू इट, दीपक सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि डोंट हैव टू वर्क फॉर द नेशन, प्लीज डोंट डू इट, जस्ट वर्क फॉर योरसेल्फ एंड वर्क वेरी ऑनेस्टली फॉर योरसेल्फ। आप खुद के लिए करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे अपने लिए। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। एंड एक और चीज है कि डोंट वर्क फॉर एनीबडी। अगर आप कंपनी में भी काम करते हैं ना, कंपनी के नॉर्म्स हैं, लेकिन आप कंपनी के लिए काम मत कीजिए। डू द वर्क फॉर योरसेल्फ। कोई आपकी एनालिसिस करे, कोई आपका सीवी लिखे, कोई किसी की जरूरत नहीं है। बस आप अपने लिए कीजिए एंड एनालाइज। हर दिन रात में आप एनालाइज कीजिए कि आज जो मैंने किया, क्या बढ़िया किया, कैन आई डू बेटर टुमारो। ये सारी चीजें सोचने की हैं फॉर एवरी डे। मैं आज भी करता हूं, मैं हर दिन करता हूं। अब 62 साल की उम्र हो गई है, फिर भी करता हूं, बिकॉज आई फील इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू बेटर आवरसेल्व्स एवरी डे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Surinder ji has left. No, Surinder ji is here. Oh, आ गए. Thank you very much, sir. Surinder ji has not left. I just wanted to bring, I think there are some very good discussion here and a lot of people who are very, very knowledgeable. Brigadier Bhargava is here, who has been the president of SSB. I mean, for this youth, the youth that you are seeing here, there is no better mentor than you, the way I think, because many of them are SSB aspirants. So we'll look for some help from you. I wanted to bring this discussion to a village level or to normal level of most of the youths that are here. हम लोग जब भी यूथ के नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो शहरों के या नौकरी संबंधित यूथ बिल्डिंग की बात करते हैं। मैं थोड़ा उसको ग्राउंड लेवल पर ले आना चाहता हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अगर आपका परिवार खेती में है तो क्या खेती में आप यूथ हैं और नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं? आजकल खेती में इतने ज़्यादा अवसर हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। तो हम क्यों शहरों की ओर देखते हैं, हम क्यों नौकरी की ओर देखते हैं, हम क्यों दरोगा बनने की सोचते हैं? हमारे बिहार में एक जोक है कि परिवार में जो पढ़ता है, अच्छा पढ़ने वाला होता है, वो IAS बनता है। जो उससे कम पढ़ता है वो दरोगा बनता है, जो उससे भी कम पढ़ता है वो MLA बनता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग इस एडेज जो है, ये जो मुहावरा है, उसको छोड़ें और जरा अपने अंदर केंद्रित करें। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका परिवार करता है, कोशिश कीजिए कि उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। खेती में हमने बहुत से सेमिनार किए हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ फार्मिंग्स हैं, वो सब आप कर सकते हैं और उसमें बहुत लोग बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। अमेरिका में मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो खेती से शुरू हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने काफी खेत खरीद लिए हैं और बड़े बड़े खेतों में बड़ी एफिशिएंसी से खेती करते हैं। क्या आप वैसा कर सकते हैं? ये सब आपको सोचना है और ये सब के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने का मतलब अभी अरुण जी ने ये कहा, अरुण जी ने, कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करने लगो कहीं। पढ़ने का मतलब है कि आपकी शिक्षा का उपयोग करके आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। ये नेशन बिल्डिंग का पहला उसूल होना चाहिए हमारा। नौकरी खोजना नहीं, बल्कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं।
मान लीजिए आपकी दुकान है गांव में, आपके पिताजी माताजी दुकान करते गांव में, क्या आप शहरों में जाकर उस दुकान को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या परमिट लेनी पड़ेगी? किससे पूछना पड़ेगा? जमीन खरीदने में क्या जरूरत होगी शहरों में? ये सब चीजों के लिए पढ़ना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर केंद्रित कीजिए अपने को। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो शहरों में हो, वो आपके गांव में हो सकता है। आप देखे हैं कोविड में सारी दुनिया गांव की तरफ भागी है। गांव बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं हमारे यहाँ। तो किस तरीके से हम उस मार्केट का, उस जनसंख्या का फायदा उठा सकते हैं? यूथ नेशन बिल्डिंग के लिए ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बाकी सब चीजें आपको जो कही गई हैं वो अपने लिए बहुत ही अच्छी हैं। सब इतने अनुभवी लोग हैं, उसका फायदा उठाइए, लेकिन जरा केंद्रित कीजिए अपने को कि आप जहां हैं उसमें क्या कर सकते हैं। हमें इतना ही कहना था शिव कुमार जी। ये एक दूसरा एंगल है, आप सबों को इस पर सोचना चाहिए। Respect, always think positive. Thank you so much, Shiv sir, for this very interactive session. Sir, I always like to thank you because sir, Vanprasth is doing always an great initiative to make youths aware that they are also a part and they can also contribute. And apart from that, I would always like to thank Dr. Pratima ma'am, because all of us we are speaking, but at the end what we are getting from it, that Dr. ma'am Pratima ma'am is concluding, and that's the very great part of this session. Thank you. Can I speak? तो इस सेशन के बाद मैं अपने लाइफ में 2 ही चेंजेस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज ही से मैं डायरी राइटिंग स्टार्ट करूंगा। एवरी डे और एवरी मंथ में उसको एनालाइज करूंगा कि क्या मेरे 1 महीने में चेंजेस आए और क्या मुझे करने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आई नेवर सी द प्रॉब्लम्स, आई जस्ट सी द सॉल्यूशंस ऑफ देम। सो आफ्टर दिस सेशन आई विल डू दिस। Sir, thank you for OnePlus team. आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा था और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। So thank you very much. Sir, I am grading 10th.